Hi friends, how are you doing today? आज है 20th of August. As you know, मैंने ये नए वीडियोस के सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें every day I make this video for you and I request you कि अगर आज आपने या आपके किसी फ्रेंड ने IELTS speaking test दिया है तो please share your experience in the comments section no matter where you are in this world. For example, in the morning I just checked one of the messages where it was stated that I'm from Sri Lanka. Is this true for Sri Lanka as well? And yes, I have said this thing number of times. IELTS is a global test. मतलब जो यहाँ पर है वो कहीं और पर भी होगा और जो चीज़ कहीं और पर है वो यहाँ पर भी हो सकती है. That means IELTS speaking part 1 cue cards and the follow-ups can be same at any part of the world. So if you have had your speaking exam today, please spare a few moments for me. Hit the comment section right now. Tell me where you had your speaking exam and what was the part 1 introductory and the follow-ups. अगर किसी फ्रेंड ने भी दिया है तो भी बताइए. प्लीज़ ऑथेंटिकेट जरूर कीजिए कि ये टेस्ट में पूछा गया है या किसी एक लोकेशन पर इस तारीख को पूछा गया है. डोंट सिंपली से कि मेरे इंस्टीट्यूट वालों ने आज कराया या मुझे आज इंस्टीट्यूट से या मुझे आप मेरे इंस्टीट्यूट से एक असाइनमेंट मिली है. वी वुड बी लीस्ट बॉदर अबाउट दोज. लेट्स हेल्प ईच अदर come up with the latest cue cards so that anyone who is planning to take the IELTS exam in the last week of August or in the first and second week of September, they do not get confused to see a new cue card in front of them. Thanks for watching today's video. Bye bye for now.